So periodic table is the unit number 5 of your GCE O-Level Chemistry syllabus. Let's start with the chapter. So overall, we all know that what does a periodic table look like. I'll just go through it in a complete way. We have periods and we have groups. Periods are the horizontal rows and groups are the vertical columns that are in front of you right here. ठीक है, group 1, 2 और 3 हमारे पास metals होते हैं. Group 4, 5, 6, 7 और 8 आपके पास non metals होते हैं. Period number जो होता है, they tell us the number of shells. Group number tell us the number of electrons in the last shell, जिसको हम एक नाम देते हैं valence electron. मोर ओवर आपके पास ग्रुप नंबर चार्ज भी बताता है कि उसके ऊपर चार्ज क्या है या वैलेंसी क्या है. मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि वैलेंसी इज नोन एज द चार्ज. जैसे ग्रुप 1+1 होगा, ग्रुप 2+2 होगा, ग्रुप 3+3 होगा, ग्रुप 4+-4, फिर ग्रुप 5 से ऑनवर्ड्स -3, ग्रुप 6 -2, ग्रुप 7 -1 और नोबल गैसेस 0. तो ये these are some of the properties that you should know about the periodic table. यहाँ पे बाकी आपको साइड पे नजर आ रहे होंगे ट्रांजिशन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज यही लिखी हुई है इसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर. फिर एल्कली मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास यहाँ पे बहुत कॉमनली जो पूछी जाती है. देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस ओवर हियर. देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस. या कुछ ग्रुप 7 की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ग्रुप 1 की, या पर ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये ग्रुप 8 की हैं. ये जो 3 ग्रुप्स है ना, दीज आर कॉमनली आस्क्ड इन योर पेपर. ग्रुप 1, 7 और 8 के बहुत कॉमन सवाल आते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमेज टू बी फोकस्ड ऑन. अब हम इनको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे. First of all, you should know the volume of 1 mole of any gas is 24 dm cube at room temperature and pressure. Moreover, ये हमने moles के लिए basics पढ़नी ही थी. Well, elements have been classified in ascending atomic number. Atomic number क्या है? Proton number. They have all been arranged according to their proton number into various groups or elements. ठीक है? Or you can say that elements have been arranged into various groups and periods on the basis of electronic configuration. बात वही आ जाती, protons are equal to इलेक्ट्रॉन. तो सारे एलिमेंट्स किस सीक्वेंस में अरेंज हुए इन सीक्वेंस टू देयर प्रोटॉन नंबर्स. देन वी हैव ग्रुप्स. When we talk about groups, now the groups are basically the vertical columns that you see in the periodic table, and the periods you have are the horizontal rows. Now we have various trends that we can look into the periods by moving left to right direction. For example, हमने पहले डिस्कस किया that the period number indicates the number of shells. For example, फर्स्ट पीरियड का मतलब फर्स्ट शेल, मतलब कि यहाँ पे कोई भी अगर एटम होगा उसका एक ही शेल होगा, दैट्स इट, वन शेल. अगर पीरियड नंबर 2 होगा देन द एटम हैज 2 शेल्स, मतलब कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं और दूसरे में मैक्सिमम 8 भी आ सकते हैं. जो पीरियड 1 में होगा, फॉर एग्जांपल हीलियम हो गया या हाइड्रोजन हो गया, उनके पास मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं बिकॉज दे आर ओनली इन पीरियड नंबर 1. पीरियड नंबर 1 मींस दैट दे कैन हैव ओनली वन शेल. एंड फॉर एग्जांपल थर्ड पीरियड का मतलब क्या होगा? 3 shells. So here you can see as going from left to right, the number of shells also increases. क्योंकि आपका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, आपका पीरियड जो है सॉरी आई मीन वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. शेल्स आपके पास कब इंक्रीज होते हैं? व्हेन यू मूव डाउन. जब आप डाउन द ग्रुप मूव होते हैं तो पीरियड 1, 2, 3, 4 पीरियड भी चेंज होता रहता है along with the number of shells. Now we know atomic number increases by 1 unit due to which the number of electrons in the valence shell also increases by 1. The number of shells remain constant. Atomic size decreases from left to right because nuclear attraction increases as the atomic number increases. अब क्या होता है? शेल नंबर वही रहता है लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हो एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं ना, ग्रुप नंबर नहीं चेंज हो रहा. जब आप लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं, ग्रुप भी तो 1 to 8 आप जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आउटर मोस्ट में इंक्रीज होते हैं, प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. तो जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होती है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पड़े हैं प्रोटॉन. नाउ दोस प्रोटॉन्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज वुड अट्रैक्ट दोस इलेक्ट्रॉन्स, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. जितने ज्यादा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी. इसलिए लेफ्ट टू राइट जाते वक्त न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज और एटम साइज डिक्रीज करता है. मोreover ionization energy, one of your concepts from A level chemistry. A level chemistry AS में हम एक ionization energy पढ़ते हैं, उसके अलावा वो आपको भी याद ही रखना. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ टर्म नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, उसके ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए. व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस एंड व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप राइट जा रहे हैं. हेंस वो आपके पास मेटल से नॉन मेटल, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब ये दैट वी आर मूविंग फ्रॉम मेटल्स टू
नॉन मेटल्स, देन यू हैव सम ऑक्साइड, जैसे कि हम एसिड बेसिस में डिस्कस करेंगे कि वी नो दैट जो हमारे पास ग्रुप वन मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल मेटल्स ग्रुप वन में आते हैं, ग्रुप टू वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, बीच में ग्रुप थ्री और ग्रुप फोर के आसपास एम्फोटेरिक आएंगे, और फिर जहाँ पे नॉन मेटल्स हैं फॉर एग्जांपल ग्रुप फाइव सिक्स सेवन और एट, वो आपको एसिडिक ऑक्साइड्स देंगे. सो दीज आर सम प्रॉपर्टी दैट वुड बी लिंक्ड लेटर ऑन विद द acid bases and salts chapter as well. You can skip the ionization definition. This is not included in your O level syllabus right now.